areas that we would stuck with it. But apart from that, really, it would be helpful. Otherwise, I don't suppose. You may carry on, but I would say at the start, we would not achieve that desired result, what we are expecting, and we join this thing. Okay. I register your concerns, Sir Faisal. Two things, first of all. From today onwards, what we have tried to do is we have created this Google Drive on which for each session, we are going to be uploading our lecture recordings for both the lab and the theory session. Yesterday's recordings have already been uploaded. This main folder will be shared with each and every one of you, and on that link you can find updated all the lecture recordings, the lab slides, the lecture slides, and whatever else material we are going to share. For instance, today in today's lab, we are going to be making use of some Python notebooks. So those will be provided to you at the start of the day, right? And as soon as we are done with the lecture recording, it will be immediately uploaded there. So that addresses, I think, one of your concerns. The other concern, I have already told you that the management is really shutting me down. I have really tried to fight them on this decision of theirs, and I have tried to get time for each and every one of you participants, because I think many of the people here will register that I was there until even 9-10 p.m. Whoever was still doing that lab, and I was helping them. So I really am all for you guys learning, and I fought the management on their decision, but somehow they're still not even listening to me. Perhaps what you guys can do is uh, talk to the management yourself, or perhaps reflect this in your feedback. Every day at the end of the day, there will be a feedback form shared with each and every one of you, and you can raise your concerns there. And I think, Ali, perhaps it is best to share the the contact of one of the dice manager, right? Ali, ठीक है। Muhammad Ali मैं अभी Javed. यहाँ पे जूम की मीटिंग के अंदर ही जूम की चैट के अंदर भी शेयर कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप पे भी मैनेजमेंट का नंबर। तो जो बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मैंने उन्हें इस डिसीजन के ऊपर बहुत फाइट किया है। कल भी उनके साथ मेरी बहस होती रही है काफी लंबी, लेकिन उसका कोई नतीजा मुझसे तो नहीं बन पाया। आप लोगों से बन पाता है तो प्लीज ट्राई कीजिएगा उसके ऊपर। We love to talk to your management, but the point is here we need to produce the output. Only thing is here we are not throwing the information. We must both sides should accept everything. What is what is the scope of the course here? I would Of simply course, say yes. And if there of is no course. assistance, if you can imagine my concern here that I've been since last night, I did not sleep properly. At 4 o'clock, I woke up and I've been trying. I could not get the solution to how to resume back my activity. So in the morning, I had to, because I did not want to disturb anyone by dropping chatting at that time. So in the morning, I just dropped my message here. Until now, I'm stuck. So you can see the one person is unable, meaning the one community, you are losing it, because we Sir, are belonging. We are professionals. We have to behave like a professional. I'm thankful. I'm very thankful that you are providing such stuff, really, which I was very concerned. I'm very thankful. But second part is still open. of course, sir. I hope that in today's session, at least in today's lab, you don't find that problem. And even if there is a problem in the previous lab, perhaps we can talk more about it afterwards. I Uh, would, appreciating, sir, but I would say if we are not clear in first lab or somebody is stuck, it has to be clarified and help him. I would appreciate really. I'm thankful. of course. Um, with that said, I guess we have 21 people or so in the meeting, so perhaps we can
start discussing the agenda for today. So, by the way, today's lab is a, a bit a bit different in that you have to. Uh, so there is no hard and fast dependency from whatever lab you did yesterday. So that is perhaps one of the good things, or uh, one of the issues yesterday was perhaps many students faced this issue with creating their inference cluster, and it was actually a problem uh, with Azure fulfilling our request for the VM कोर कोटा सो उसके अंदर होता यह है कि हर वर्चुअल मशीन टाइप का हर रीजन के अंदर देयर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल कोर्स जो कि आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर लिमिट लगाई होती है Azure ने बाय डिफॉल्ट एंड बाय डिफॉल्ट दैट लिमिट इज 10 कोर्स पर रीजन so we put a request to Azure कि वो हमारी ये लिमिट इंक्रीज कर दें. We made two requests. एक रिक्वेस्ट हमारी मशीन लर्निंग सर्विस के कोर्स की थी, एक रिक्वेस्ट हमारी कुबरनेटिस के क्लस्टर के कोर्स की थी. तो जो मशीन लर्निंग के कोर्स की रिक्वेस्ट थी वो पूरी हो गई, जिसकी वजह से ज़्यादातर लैब के अंदर जिन लोगों को वो लैब करने का मौका मिला है उसके अंदर लोगों को उस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं आए. लेकिन लेकिन वो जो आखिरी स्टेप था जिसके अंदर कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय करना था, वहाँ पे Azure क्योंकि टाइम के ऊपर हमारी कोटा लिमिट पूरी नहीं कर सका, इस वजह से लोग डिप्लॉयमेंट वाला आखिरी स्टेप नहीं कर सके. तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, लेकिन आज उस तरह का कोई इशू नहीं है. वी आर होपिंग कि आज की लैब भी हम जल्दी शुरू कर दें और इसके अंदर आप लोगों को उसके ऊपर बैठ के एक्सप्लोर करने का ज़्यादा टाइम मिले. दैट सेड, आज के एजेंडा के ऊपर वी हैव फोर मेन थिंग्स. We have machine learning, running machine learning experiments using the Python SDK. और Python SDK के को यूज करते हुए जब आप एक्सपेरिमेंट्स लिखेंगे उसके बाद आपने मॉडल्स ट्रेन करने हैं उसी Python SDK को यूज करते हुए, and you have to create run configurations and you will be able to learn about machine learning estimators and how to use those in the SDK, as well as register models and register data stores and data sets and how to handle data in the context of Azure Machine Learning Service. So I'll jump right ahead into the machine learning experiments. I think yesterday we have also discussed a bit about what machine learning experiments are. So perhaps you would remember one of our slides from yesterday. So an experiment is just a process which runs with the help of a script and produces two things. It produces some metrics and it produces some file outputs, and that is exactly what we are going to be doing using our Python SDK. And we saw a few examples yesterday, and since we were more focused in the practical part, we were more focused on the designer pipelines. We could not play around with this part, so there will be more practical applications of this.
to see today. Getting back to our presentation, um, first of all, first of all, I'd roughly talk to you guys a little bit about the machine learning life cycle. It all starts with your data. You you have to then run your exploration methods on it. You have to explore the data, analyze it. You then prepare it for machine learning. Uh, then you train a model, evaluate that model. Uh, then you go into deployment, and then you have to start managing that model. Now, when you start to see each of these things in isolation from each of the other steps, then you have to start thinking of everything in terms of experiments. So for instance, preparing the data would become one machine learning experiment, and perhaps training the model would also become another machine learning experiment for you to handle, right? And then the evaluation process, of course, Azure Machine Learning Service, Machine Learning Studio provides you interface for you to monitor your model's performance and everything. So just a reflection on Azure Machine Learning, I guess most of you are should be by now familiar uh, with what it constitutes. It provides you with compute, the data and the notebooks and uh, all the tools to do end-to-end machine learning. So, uh, so, so we know more or less everything we need to know about machine learning experiments. I'll jump right into the run configurations and machine learning estimators. Uh, so जब आप मशीन लर्निंग का अपना एक्सपेरिमेंट सबमिट कर रहे होते हैं ना, आपने अपनी लोकल इंस्टेंस, और बाय लोकल इंस्टेंस वी मीन जो कंप्यूट इंस्टेंस आपने क्रिएट की हुई है उसके ऊपर आप इनिशियल अपनी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उसके ऊपर आप अपना मॉडल का प्रोटोटाइप वगैरह बिल्ड करते हैं और उससे आपकी एक ट्रेनिंग स्क्रिप्ट जनरेट होती है. जब आपकी एक्सपेरिमेंटेशन के साथ when you are happy with whatever experimental code you have written and whatever machine learning model that you think will come out of it, then you put it into a training script और फिर उस ट्रेनिंग स्क्रिप्ट को यूज करके आपने लार्ज स्केल के ऊपर ट्रेनिंग अपनी करी. When you want to move to the large scale to do training, and when you want to do it at a bigger scale, you have to start using it in compute clusters instead of just one isolated local machine. और प्रॉब्लम अब यहाँ पे एक ही आती है कि लोकल मशीन के ऊपर तो जारी बात है आपने कोई ना कोई एक अलग किस्म की एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनी हुई थी, वहाँ पे जो आपकी लाइब्रेरीज थी, जो आपके टूल्स थे, whichever packages you needed to run your machine learning code were already installed in that local machine. Now the compute cluster, the target cluster on which you're going to run the training, does not know what kind of development environment is needed. And that is exactly where run configuration comes in. So run configuration, all it does is it provides a way for you to communicate the environment needs and as well as the configuration as to कि आपकी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट कंप्यूट टारगेट को कैसे इस्तेमाल करेगी, irrespective of कि आपका कंप्यूट टारगेट है क्या. those could be, आपका कंप्यूट टारगेट एक VMs का कंप्यूट क्लस्टर हो सकता है, आपका कंप्यूट टारगेट आपकी HD इनसाइट का क्लस्टर हो सकता है जो कि हडूप बेस्ड है, आपका कंप्यूट टारगेट डेटाब्रिक्स का क्लस्टर हो सकता है जो कि स्पार्क बेस्ड है. इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी वो कौन सी इन्वायरमेंट आपकी कंप्यूट टारगेट के ऊपर चल रही है, आपकी रन कॉन्फ़िगरेशन जो है ना विल एनेबल योर कोड
to run on your ML compute target. It will uh, it will enable your compute target to be able to execute whatever training script you have submitted. So that is the whole idea of a run configuration, and we'll see how to write run configuration and how to pass those in a bit. तो आप बेसिकली एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक क्रिएट करते हैं और उस रन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बाइंड कर देते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे आज हम यूज करेंगे और एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, दैट इज एस्टिमेटर्स. सो एस्टिमेटर्स आपके एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन क्लास है. आपके डिफरेंट किस्म के मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स अवेलेबल होते हैं. Azure के अंदर भी मल्टीपल अवेलेबल हैं. Azure provides PyTorch, TensorFlow, Chainer, Ray की RL lib भी खैर इन्होंने डाल दिया. I don't know many people who use the RL lib, but it's good to see that they're providing support for it. And of course the most common of them, scikit-learn, जिससे अमूमन ज़्यादातर लोग हम में से मशीन लर्निंग वगैरह शुरू किया करते हैं पाइथन के अंदर. और एस्टिमेटर का काम ये है कि इन इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हो, इट विल कंस्ट्रक्ट द एनवायरनमेंट फॉर दैट फ्रेमवर्क. अगर आप sklearn के साथ काम कर रहे थे तो तो आपकी एस्टिमेटर क्लास जो है उस sklearn की एक एनवायरनमेंट बिल्ड करेगी और उसकी रन कॉन्फ़िगरेशंस जो है ना वो इस हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन क्लास से क्रिएट हो रही होगी. और इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के आर्ग्यूमेंट्स पैक कर सकते हैं while creating this class to not only pass inputs to your training script, जैसे कि यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में नजर आएगा कि एक sklearn का एस्टिमेटर क्रिएट किया गया, जिसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर scikit-learn का पैकेज इंस्टॉल हुआ होगा. ये जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा उसके अंदर scikit-learn बाय डिफॉल्ट शिप होगी. और इसी को आपने बताना शुरू कर दिया कि मेरा सोर्स कोड कौन सी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है और सोर्स कोड की आपकी जो ट्रेनिंग स्क्रिप्ट है उसका क्या नाम है, उस ट्रेनिंग स्क्रिप्ट को कौन कौन से इनपुट्स पास करने हैं, नेम्ड इनपुट्स जो आपके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आ रहे हैं. और ऑफ कोर्स उस ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के अंदर आपने कोई ना कोई इस तरह आर्ग्यूमेंट पार्सर का कोड लिख के आप उस इनपुट को रिसीव कर लेंगे फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स. तो इस तरीके से एस्टिमेटर्स काम. So it is not exactly a Docker image. इस स्टेप के ऊपर ये एक डॉकर इमेज नहीं बनता. इस स्टेप के ऊपर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं पाइथन की वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के साथ. अगर आपने पाइथन की वर्चुअल एनवायरनमेंट्स यूज की हैं या फिर आपने कॉन्डा की एनवायरनमेंट्स यूज की हैं, एनाकोंडा की एनवायरनमेंट्स, तो इट इज मोर लाइक दैट. आपके बैक एंड के ऊपर एनाकोंडा की एक एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्ट हो रही होती है रादर देन अ डॉकर इमेज. डॉकर इमेज आपका तब क्रिएट होगा जब आप इस मॉडल को जब आप इस एस्टिमेटर से मॉडल ट्रेन कर लेंगे और फिर उसे रजिस्टर करके उसे प्रोडक्शनाइज करने लगेंगे, उसे सर्व करने लगेंगे. सो Keras is I think raw में नहीं provided, but TensorFlow provides support for Keras, right? So TensorFlow के अंदर से आप उसे यूज कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर कि रॉ Keras लाइब्रेरी जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं. सो एस्टिमेटर्स की मदद से आप अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स की एनवायरनमेंट वगैरह सेट करके Azure मशीन लर्निंग को आप अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट पास कर सकते हैं along with the run configuration. और इससे जारी बात है, इसकी मदद से आपने कोई ना कोई मॉडल ट्रेन करना है, और एक बार मॉडल ट्रेन हो जाए तो उसको आपको रजिस्टर करना पड़ता है. यू हैव टू रजिस्टर दैट मॉडल टू बी एबल टू यूज इट for deployments. To be able to serve that model, you have to first
register that model. Now that registered model is a logical container. उसका एक docker image बनेगा और उसके अंदर there is not just the model file but all dependency files. For instance आपके जैसे if you're saving a neural network model, तो oftentimes what happens is अगर आप keras के साथ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर एक अलग फाइल के अंदर क्रिएट होता है और उसके जो वेट्स होते हैं वो एक डिफरेंट फाइल के अंदर सेव होते हैं. एंड ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल. केरास ने बाद में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड्स भी प्रोवाइड किए, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो कि जिस केस में मेरे पास मेरे मॉडल के की मल्टीपल फाइल्स होंगी. तो इवन अगर मेरे मॉडल की मल्टीपल फाइल्स आ रही हैं तो वो सारी की सारी इस जब हम मॉडल रजिस्टर कर रहे होंगे तो वो हम एक ही लॉजिकल कंटेनर के अंदर कर रहे हैं और ये मॉडल फिर मशीन लर्निंग वर्कस्पेस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और इसको यूज करके आप अपनी पाइपलाइंस बिल्ड कर सकते हैं. जैसे हमने कल देखा था डिजाइनर के अंदर एक एंड पाइपलाइन बेसिकली क्या थी कि एंड टू एंड आपका मशीन लर्निंग का पूरा फ्लो आप एस्टेब्लिश कर रहे थे और उसे आप एक सिंगल क्लिक से उसे आप एग्जीक्यूट कर पा रहे थे. तो यहाँ पे भी पाइपलाइन जो है उसे मतलब आप एक इंस्ट्रक्शन से आप रन कर सकेंगे इवन अगर आपने एसडीके से अपनी पूरी पाइपलाइन को डिक्लेयर किया हुआ. और मॉडल्स को रजिस्टर करने का के लिए हमारे पास ना अल्टरनेट मेथड्स भी हैं. सो एक तरीका तो यही था ना कि हमने रन कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड की, एस्टिमेटर के थ्रू मॉडल ट्रेन किया और अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया कि मॉडल को रजिस्टर कर दो. As an alternate to that, even if you have trained the model elsewhere, even if you have trained a Keras model elsewhere or a TensorFlow model elsewhere, या अगर आपके पास even sklearn से आपने मॉडल ट्रेन किया है, फर्ज करें मैंने अपने लैपटॉप से ट्रेन किया है, I can upload that from my local files और उस लोकल फाइल से अपलोड करके मैं उस मॉडल को रजिस्टर कर सकता हूँ और वो मॉडल वर्क स्पेस के अंदर स्टोर हो जाता है और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के अक्रॉस उसे यूज़ किया जा सकता है. मल्टीपल लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसकी जो भी सर्विसेज उसके ऊपर पब्लिश कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट डेटा स्टोरेज. सो हमारे एजेंडा के ऊपर 4 आइटम्स थे ना यहाँ पे कि हम एसडीके के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स लिख सकें, हम रन कॉन्फ़िगरेशंस और मशीन लर्निंग एस्टिमेटर्स डिफाइन कर सकें, हम मॉडल रजिस्टर कर सकें और लास्ट आइटम जो हमारे एजेंडा के ऊपर है आज के, उसमें डेटा स्टोर्स और डेटा सेट्स के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. सो कल मैंने जैसे बात की थी कि डेटा को मैनेज करना इन इटसेल्फ एक ना काफ़ी बड़ा टास्क है और कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि व्हाट इफ आपका एसक्यूएल का ऑन प्रेम डेटा स्टोर है और उससे आप डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, व्हाट इफ यू डोंट हैव सीएसवी फाइल्स जिसको यूज करके आप अपना मॉडल ट्रेन कर सकें या सीएसवी फाइल अगर हम इस तरह से अपलोड नहीं कर सकते. सो डेटा स्टोर्स एग्जैक्टली प्रोवाइड अ सपोर्ट फॉर दैट. सो डेटा स्टोर्स क्या हैं? आपके जो Azure क्लाउड के अंदर डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल हैं जिन्हें हमने कल डिस्कस किया था. 3-4 अभी यहाँ पे भी एग्जांपल दिए हैं. देयर इज Azure स्टोरेज अकाउंट, देयर इज डेटा लेक स्टोरेज, एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं आपकी या डेटाब्रिक्स का फाइल सिस्टम है. उन सारों इररिस्पेक्टिव के आपकी कौन सी सर्विस है जिसके अंदर होस्ट हो रहा है डेटा, इट कैन बी कनेक्टेड टू द मशीन लर्निंग वर्कस्पेस as a data store. It can be registered as a data store or that would make it really आपको basically एक easy और abstract method provide हो जाएगा to be able to access the data in that service.
So the first thing you would have to do, अगर आपका on-prem कहीं पे data पड़ा हुआ है, you would have to first of all move that to Azure somehow. अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है whether you directly take a data dump in CSV files या Parquet बनाते हैं या Avro files के अंदर आप उसे publish करके upload करते हैं कहीं पे, या फिर आप Azure के ऊपर कोई database service use करते हैं. But whatever happens, once you brought it on the cloud, you can register it in your machine learning workspace as a data store. और by default भी Azure machine learning के अंदर दो किस्म के डेटा स्टोर्स आते हैं. दो डेटा स्टोर्स बिल्ट इन होते हैं वर्कस्पेस के साथ फॉर लिमिटेड स्टोरेज ऑफ कोर्स. उसके अंदर आपका एक ब्लॉक कंटेनर होता है और एक आपका फाइल कंटेनर होता है. Again, we've talked a bit yesterday about के blob storage और file storage के दरमियान थोड़े से differences क्या हैं. तो basically जो आपका unstructured large files data होगा वो आप blob के अंदर usually handle करेंगे, और जो आपकी regular SMB type आपकी storage होगी वो आपकी file containers के अंदर आएगी. एंड जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो हम इन दोनों की एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ पे हमने ये वाला डेटा स्टोर यूज करना है. तो जब आपने जो आपके साथ पास डिफॉल्ट डेटा स्टोर्स आ रही हैं, दोज आर ओनली फॉर लिमिटेड स्टोरेज ऑफ कोर्स. जब आपके पास जीबीज एंड जीबीज ऑफ डेटा अवेलेबल है, ये टेराबाइट्स के अंदर आपके पास डेटा आ रहा है और उसके ऊपर आपने ट्रेनिंग करनी है, अज्यूमिंग कि किसी के पास टेराबाइट्स में यहाँ पे डेटा सेट अवेलेबल हो, तो इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल कि आप अब अपनी कोई अप्रोप्रिएट Azure की स्टोरेज सर्विस यूज़ करें. फॉर इंस्टेंस अगर आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है कोई इतना बड़ा, तो you might want to put it into a large scale database जो कि database service जो कि Azure offer कर रही है. For instance, you can put it into Azure SQL database or you can put it into Azure Synapse Analytics database, or then you register whatever database you put your data into as a data store in your Azure machine learning service. और उस existing data store को आप अपने experiment के अंदर mount करें, and then you can start directly ingesting data in your experiments, in your training scripts, और इस तरीके से आप अपने data store से data को use कर सकते हैं. Now जब आप data store को mount करते हैं ना onto in your experiment, तो उसके तीन roughly access modes होते हैं. So data stores are not just read only. They provide both read and write support. और write support के लिए obviously there is the upload access method, जिसके अंदर अगर आपने कोई आपके experiment के result में कोई scored आपका data set आ गया, या मसलन for the sake of an example, I'd say that if you were going to score the propensity of your users to purchase some product in मतलब आप कोई ऑनलाइन रिटेल स्टोर चला रहे हैं और आपके पास मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, और आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा आपने हर यूज़र के अगेंस्ट आपने एक प्रोपेंसिटी निकाल के देनी है कि ये प्रोडक्ट XYZ परचेज कर सकता है या नहीं, या उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, राइट. और इस सिनेरियो में जब आप उन यूजर्स को स्कोर करेंगे और सारे यूजर्स के अगेंस्ट प्रोपेंसिटी कैलकुलेट कर भी लेंगे और सारे यूजर्स के अगेंस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी आ भी जाएगी, यू विल नीड टू पुट इट बैक इनटू योर डेटाबेस समहाउ, राइट. तो उसके लिए आपको ये प्रोविजन अवेलेबल है कि आप अपनी उस डेटाबेस को एज अ डेटा स्टोर रजिस्टर करें. उसके अंदर आप अपलोड टाइप डेटा एक्सेस मोड रखें, और आपने जो भी यूजर्स के अगेंस्ट पूरी प्रोपेंसिटीज कैलकुलेट की है, जो भी टेबल उसका आपका क्रिएट हुआ है, however big that is,
you can directly upload to your data store. और read access के लिए there are two types available. There is download type and there is mount type. Download is really simple. Download के अंदर वही होता है जो नाम बता रहा है कि डेटा स्टोर के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उनकी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी ऑन टू योर लोकल स्टोरेज. यानी आप जिस मशीन के ऊपर जुपिटर रन कर रहे थे उसके आपका जो वर्किंग फोल्डर है उसके अंदर आपकी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी व्हेन यू एक्सेस एनी डेटा स्टोर इन डाउनलोड मोड. और इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे अभी व्हेन आई स्टार्ट विद द डेमो. दूसरी टाइप है माउंट. और माउंट एक्सेस टाइप के अंदर ये होता है कि जो भी डेटा स्टोर है वो लाइक एन एक्सटर्नल स्टोरेज आपकी जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके साथ माउंट हो जाता है एज अ रिमोट स्टोरेज. और जो भी आपके कंटेंट्स हैं वो आपकी एक किस्म के रिमोटली आप उसे एक्सेस कर रहे होते हैं और एक किस्म का आपका मतलब वो स्ट्रीमिंग चल रही होती है. मतलब you don't have to copy the entire data set onto your disk. Only the rows being read are brought in. और इस कॉन्टेक्स्ट को आप लोकल कंप्यूट के साथ नहीं यूज कर सकते. इससे आपको माउंट टाइप को आपको ना अपने कंप्यूट क्लस्टर्स के साथ यूज करना पड़ता है. So again to recap all the data stores, इस एक स्लाइड के अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर किया कि Azure ने और जितनी भी आपकी स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड की हैं those can be connected to your machine learning workspace ताकि आप उसमें अवेलेबल डेटा को अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज कर सकें. चाहे वो आपके स्कोरिंग एक्सपेरिमेंट हैं चाहे वो आपके ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं. और आप you can do both read and write to these data stores. That's the recap. एक और abstract class जो कि Azure Machine Learning प्रोवाइड करती है वो है data sets. So data sets और data stores के अंदर फर्क ये है कि data sets आपके जैसे हमने कल भी एक डेटा सेट क्रिएट किया था. चाहे आप इवन डेटा स्टोर्स को यूज करके डेटा सेट्स क्रिएट कर सकते हैं. और डेटा सेट्स के अंदर होता ही है कि आपकी जो भी अटैच्ड साथ स्टोरेज अकाउंट आ रहा है उसके अंदर उस पूरे के पूरे डेटा की कॉपी क्रिएट हो जाती है. एंड दैट कॉपी इज बेसिकली क्रिएटेड देयर एज अ वर्जन डेटा ऑब्जेक्ट, which means that you can write multiple versions of that data set and be able to access all of those versions. और ये ज़्यादा recommended way है to deal with and to use data in the context of your experiments because this type of data abstraction is directly available for you and it is readily available for use with the pandas APIs for example. और इसके अंदर आपकी एक बड़ी अच्छी डेटा की लीनिएज भी एस्टैब्लिश हो जाती है आपके ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर. खैर डेटा सेट्स की फर्दर दो मेन टाइप्स हैं. वन टाइप इज द टेबुलर डेटा सेट जिसके अंदर आपका सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट आएगा. अगर आप RDBMS से कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं probably that will be put into tabular. अगर आपके पास CSV फाइल्स हैं डेटा सेट क्रिएट करने के लिए तो that will be created as a tabular data set. The other type of data set that is available is a file data set. और file data set के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसकी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो नहीं सकती है. आपकी जो भी अनस्ट्रक्चर्ड टाइप डेटा होगा मसलन इफ यू आर डीलिंग विद मल्टीपल इमेजेस फाइल्स, सही है, तो
उसको आप इन अ टैबुलर वे तो स्टोर कर नहीं सकते. सो उसको डील करने के लिए आपको यस लाइक बिग डेटा. और ऑफ कोर्स बिग डेटा तो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि फाइल डेटा सेट आप तब यूज करेंगे जब आपके पास आइदर आप उन फाइल्स को डायरेक्टली खुद कोड के अंदर रीड करके डील करना चाहते हैं या फिर आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है. So, so two scenarios really to be able to use the file data set. One, your data is unstructured, or two, if you want to process the data at file level. Uh, फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन कर रहे हैं इमेजेस फाइल्स को यूज करके, तो दैट इज अ परफेक्ट सिनेरियो फॉर यूजिंग फाइल डेटा सेट्स. ठीक है. इसकी यूजेस की एग्जांपल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं. सो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है कि आपने एक डेटा स्टोर पे किया और उस बेसिकली डेटा किसी डेटा स्टोर के अंदर डेटा सेट क्रिएट होता है. और यहाँ पे जो हमारा डिफॉल्ट ब्लॉब डेटा स्टोर था, उस डेटा स्टोर के अंदर हमने ये चंद फाइल्स हैं जिनसे हम टैबुलर डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं. सो हमारे पास अगर मल्टीपल CSV फाइल्स हैं, उनसे हम टैबुलर डेटा सेट क्रिएट करना चाहते हैं इस ब्लॉब डेटा स्टोर के अंदर. and then all you have to do is dataset API में से call tabular dot from delimited files, और ये डायरेक्टली आपके CSV पाथ्स को यूज करते हुए एक डेटा सेट क्रिएट कर देगा. और once you've created this data set object in your script, उसके बाद all you have to do is register that data set in your workspace to be able to use it both in and outside of your Jupyter notebook, of course. आप even अगर आपने Jupyter के अंदर से डेटा सेट को रजिस्टर किया, आप बाहर डिजाइनर के अंदर भी उस डेटा सेट को यूज कर सकते हैं. So we'll see an example of this too soon enough. और अगली जो मसलन यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उस सिनेरियो के अंदर, पहले सिनेरियो के अंदर हमने टैबुलर डेटा सेट कंस्ट्रक्ट किया है. दूसरे के अंदर हमारा इमेजेस की मसलन अगर हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है और उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं, दैट इज अ फोल्डर ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. और उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का हम बेसिकली फाइल डेटा सेट क्रिएट करेंगे. और अगेन हमने उसी ब्लॉक डेटा स्टोर को यूज करते हुए उसके अंदर एक फाइल डेटा सेट क्रिएट कर दिया इमेजेस के साथ. and then we can go ahead and start using it. So for instance, मेरे पास अगर tabular data set था, तो उसको डेटा सेट को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि हमारे पास अगर tabular data set था तो उसे यूज करना कितना आसान है हमारे एक्सपेरिमेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि you can just call to pandas data frame on your tabular data set and that's it, you're ready to use it. एक बार आपने डेटा सेट रजिस्टर कर दिया, then it is as simple as that. You don't have to worry about कि आपने अपनी फाइल्स फलानी जगह से फलानी जगह कॉपी करनी है और फिर आप सही पाथ दोगे तो रीड होगा. All you have to care about is कि एक बार आपने उस डेटा सेट को डिफाइन कर दिया है, अब आप उसे बाय नेम रेफरेंस करके जस्ट टू पांडास डेटा फ्रेम उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, राइट. सो डेटा सेट क्रिएट करना और एक चीज है उनको एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज करना इज अनदर थिंग जो कि हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे. एस्टिमेटर की जैसे sklearn की हमने पहले एक एग्जांपल देखी थी, सेम उस तरीके से हम उस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अपने डेटा सेट्स को पास कर सकते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किया हो कि कौन से डेटा सेट को यूज करना है. हम उसे एज एन इनपुट टू द स्क्रिप्ट जो है हम पास कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे sklearn टाइप एक एस्टिमेटर बन रहा है
जिसको हमने एक एक्सपेरिमेंट फोल्डर बताया हुआ है, जिसको हमने एक ट्रेनिंग स्क्रिप्ट बताई है, हमने बताया कि लोकल मशीन के ऊपर रन करो, यानी कंप्यूट इंस्टेंस के ऊपर रन करो, एंड देन इनपुट के अंदर मैंने उसी डेटा सेट को पकड़ के एज नेम्ड इनपुट और CSV डेटा डिफाइन कर दिया। ऑफ कोर्स पिप पैकेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज साथ डिफाइन करनी पड़ती हैं टू बी एबल टू डायरेक्टली यूज दैट इन पांडास। आपको ये वाले पैकेज की ज़रूरत पड़ती है, Azure ML डेटा प्रेप और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पांडास। अगर आप ये इनपुट डिफाइन नहीं करेंगे पिप पैकेजेस के अंदर, तो आपकी एनवायरनमेंट इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएगी जो ऊपर एक एग्जांपल दिया टू पांडास डेटा फ्रेम। और एक बार आपने अपनी इस ट्रेनिंग स्क्रिप्ट को यूँ पास कर दिया, तो अपनी उस ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के अंदर जो आपने कोड लिखना होगा वो सिर्फ इतना लिखना होगा कि आप अपने जो भी रन कॉन्टेक्स्ट आप डिफाइन करेंगे, उसमें से आप अपने जो आपने बाहर एज नेम्ड इनपुट डेटा सेट डिफाइन किया था, वो यहाँ पे रन कॉन्टेक्स्ट से इनपुट डेटा सेट से आप उसे एक्सेस कर लेंगे और फिर टू पांडास डेटा फ्रेम उसके ऊपर कॉल कर पाएंगे। सो आप अपनी स्क्रिप्ट को पास कर सकते हैं जो भी आपने डेटा सेट डिफाइन किया हुआ है, और आप अपने एस्टिमेटर को वो एज अ नेम्ड इनपुट उस डेटा सेट को रेफरेंस कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट्स वाइज हमारे पास यही चंद चीज़ें थी जिनके ऊपर हम आज के दिन में एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आज के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी एक्सपेरिमेंटेशन का मिले। आज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम बजाय इसके कि हम थ्योरी और डिस्कशन के अंदर स्पेंड करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हैंड्स ऑन लैब को प्रैक्टिस करने में लगाएं। तो इट्स 10:47 और हमारी थ्योरी की डिस्कशन खत्म हो चुकी है। मे बी वी कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर वी कैन स्टार्ट विद द डेमो, और मेरा ख्याल है डेमो भी अगर हम जल्दी से ख़त्म कर पाएंगे तो वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस द लैब्स। ये इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि पांडास डेटा फ्रेम जो है ये क्या कोई डेटा फ्रेम्स है ये, या पांडा खाली अकेला है कोई फ्रेम है, डेटा फ्रेम है, या और भी अवेलेबल है इसके ऊपर? सो अच्छा, आई वाज मैं इसका एक जवाब देना चाहूंगा। I was जी सॉरी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्लास को थोड़ी बहुत मतलब पाइथन के साथ फेमिलियरिटी, और पाइथन के अंदर जो डेटा साइंस की लाइब्रेरीज वगैरह जनरली अवेलेबल है मशीन लर्निंग को डील करने के लिए, उनकी फेमिलियरिटी है। सो पांडास इज बेसिकली एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उस डेटा को इजीली आप यूज़ कर सकते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन वगैरह करने के लिए, और काफ़ी फ्रेमवर्क्स के अंदर पांडास की सपोर्ट मौजूद होती है। तो पांडास एक आपका डेटा फ्रेम प्रोवाइड करता है। अगर आप स्पार्क के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप डेटा फ्रेम्स को जानते हैं तो मोर और लेस उसी तरीके का एक आपका डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पाइथन के अंदर जो आपकी पांडास लाइब्रेरी है वो क्रिएट करके देती है, जिसके अंदर आप अपना स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है ना उसे लोड करके डील कर सकते हैं। जी Mr. Faisal, I hope there is no ambiguity there. Okay, I understand. Any other questions? Perhaps we can. मैं ये डेटा फ्रेम में एक पॉइंट ऐड कर दूं, इफ यू अलाउ मी। Sure. डॉट नेट के अगर कॉन्टेक्ट से कुछ लोग आ रहे हैं तो डॉट नेट में हमारे पास पहले एक टेबल होता था जिसको हम डेटा टेबल कहते थे। डिफरेंट सोर्सेज से, डेटा बेसिस से आप उठा के डेटा टेबल के अंदर मैप करते थे, और डेटा टेबल इवेंचुअली फिर डॉट नेट के अंदर नेटिव सपोर्ट थी कि आप डिफरेंट तरीके से उसको प्लॉट कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। तो पाइथन के लिए डेटा फ्रेम बेसिकली
उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे डॉट नेट के अंदर डेटा टेबल था हमारे लिए। फिर इवेंचुअली आप प्लॉटिंग बड़ी इजिली कर सकते हैं, डिफरेंट मैपिंग की लाइब्रेरीज हैं मैप्स की जो समझती हैं डेटा फ्रेम को, इवेंचुअली आपको इजी डेटा मैनिपुलेशन के लिए एक्सपोज हुआ हुआ है वो। Thank you, Asad. I want to understand the scope of the Python usage in ML learning. Can you a bit specific so that I can focus that what are the elements like the pandas you have mentioned. So it would be easy to understand this. So most of our course is structured in a way because Python uh, is where most people start when they're starting on their machine learning journey, when they're starting to get into the field of data science. So that is why um, I think the course was designed in a way uh, to make it easier for My people who are. my question concern is that what are the prerequisites of ML regarding Python learning? So at least we must be aware of these core things as to learn moving to ML. So in this context, I'm talking about. Right. So in this context, I would say uh, that familiarity with a few libraries, for instance, using pandas data frames, using basic machine learning libraries like scikit-learn, using um using some basic functions on the NumPy library. That is what you would start with if you're looking at machine learning from a Python background. Uh, Noman is right that for most people who are coming from statistics background, they would be more familiar with R, and they would uh, they would even prefer R, uh, even when using Azure Machine Learning Service. But since most people coming from the software background are more familiar with Python, that is why we have tried to keep the entire course focused on Python development rather than from an art perspective. So what is the the percentage if you divide the ML learning the Python and R? Can you divide the percentage? The more area goes to the Python, and some of the area you can use from the R. Could it be like this? You want me to cover some content of the course in R as well? Is that what you are asking? Yeah, of course. I'll see if maybe in one or two of the labs maybe we can move to R, or perhaps uh, give you alternate scripts that you can run in R. But I think for most of the people in the class it would be difficult, especially when we're dealing with more difficult concepts, which we would be definitely dealing with as we move further in the course. So uh, so here's what I can do. I can uh, for some of the more simpler tasks, for instance, creating maybe basic experiments and creating some basic models, I can give you just like I'm trying to provide you with Python notebooks and code examples. I think I can try to provide some sample R notebooks for you so that you can see both examples of how to do the same thing in R and how to do the same thing in Python. But I don't think that the entire course material can be covered in both the languages. No. I did not mean that, but thank you. At least one or two examples somewhere that you feel comfortable. That yes, it's simplest, and we can
give example as comparison, what it is done in the Python, the same thing can be achieved. And the R, only one or two examples somewhere if you like it. Definitely, definitely, and I will try to provide those examples. And the more time that we have for practical, I think the more time you will have to even run those examples and be able to get a feel of how R feels when you're running it in Azure machine learning. And I think Noman has provided some of his input on the group chat as well. So if anyone is unfamiliar with scikit-learn, I think the link that Numan has shared would be a good place to get an introduction to what scikit-learn is all about. But soon enough, we'll be seeing it in practice. One more question regarding this ML. Can I frame out my, scope of learning in a way that what are the areas of stats you would cover in this ML regression, probability, what else? Because it has Right. not, it hasn't So been given any outline for that in this aspect. That's why I'm asking. So as I said yesterday, this course is not about teaching statistics or machine learning algorithms. This course is much more about this course starts where you already know how to do some of those things, and now you want to move forward uh, to to creating an end-to-end machine learning flow, और और आप उस सारे मॉडल बेसिक ट्रेनिंग को यूज करते हुए you want to be able to productionize your models, and you want to be able to design an end-to-end machine learning pipeline on Azure. So this course is more focused on that, on the high level things rather than the details about modeling and statistics and what kind of techniques are being used in there. But if you are asking about kind of what kind of models we'll be using in the coming labs, then I can talk to you about that. Numan, you want to say something? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर किसी मतलब जितने भी ये फेलोज हैं उनमें से किसी को अगर ये अंडरस्टैंड करने में इशू हो रहा है कि मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम्स है वो हम किस तरह यूज करेंगे या पाइथन का, तो वो इन द मीन वाइल जब ब्रेक का टाइम होगा ना, तो वो उस दौरान मतलब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ इस बारे में कि जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं वो कौन कौन से जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं और उनको हम क्यों यूज करते हैं, और जो कल वाली एग्जांपल थी उसके अंदर हमने कौन सा यूज किया और उसको हमने क्यों यूज किया। तो ये कि इससे हमारा वो जो ब्रेक का टाइम है वो सेव हो जाएगा, क्लास का मेजॉरिटी लोग दोनों चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दिस इज एक्चुअली सजेशन फ्रॉम माय साइड। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वेल एंड गुड, तो अदरवाइज जैसे आपकी मर्जी है जिस तरह भी है। हाँ ठीक है, दैट इज अ गुड सजेशन। इफ यू गाइस वांट टू डिस्कस अमंग योरसेल्फ, अगर आप आपस में डिस्कशन से इन चीज़ों को आपस में शेयर करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। बट इफ समवन वांट्स टू ऑल्सो गेट सजेशंस फॉर where to go to get to learn these things, where to find the resources to be able to understand what is happening, then I guess what we can do is create a centralized document in which जिन भी over the course span हम जितने भी machine learning algorithms यूज करने जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स या उनके बारे में कोई हमारे पास अच्छे लिंक्स हैं, मे बी ऑल द क्लास कैन पिच इन देयर, और वो एक हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट बन सकता है। दैट्स अ गुड सजेशन। थैंक यू। Yeah, I really appreciate this. Sir, one thing I want to suggest that the only thing you have to share
you will have to share after the lecture is the recording of the demo. I think it must be shared after the Right. lecture. Only I So, want to, because there's a lot of things you can have of course, missed during the lectures. Tem- Temur, sorry, I'm cutting you off. At the start of today's conversation, I told everyone about this that we have created this centralized this one Google Drive folder for all the sessions, and at the beginning of the day during the session, these folders will be shared with you with not only the lab and the lecture slides, and not only the code files that you will be using that day, but as soon as the session finishes, मसलन अभी हमारा ये थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो रहा है, as soon as this finishes the recording will be uploaded in the same folder, और ये आपके साथ पहले से shared है, so you will be able to access it there. Thanks. Okay. Any other questions? Perhaps we can move to demo. अस्सलामुअलैकुम सर। सर हम इसमें ये सिर्फ पाइथन को यूज़ करेंगे एज़्योर में, या कोई और लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं जैसे डॉट वगैरह? So mostly हम लोग पाइथन यूज कर रहे होंगे। कुछ एग्जांपल्स आर की आएंगी, बट जैसे हमने Azure मशीन लर्निंग सर्विस के अंदर देखा है, उसमें मेनली इन्हीं दो लैंग्वेजेस की सपोर्ट है, पाइथन एंड आर, राइट? सो इन ओके सर, थैंक यू। बलिए कमर है प्लान, सॉरी, इसके अंदर एक ML.NET का फ्रेमवर्क भी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, तो क्या वो नहीं यूज हो सकता मॉडल ट्रेनिंग के लिए? मॉडल ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उसकी आई आई डोंट थिंक उसकी एंड फुल सपोर्ट है अक्रॉस जितने भी, मतलब जो फुल कैपेसिटी है एज़्योर मशीन लर्निंग के फीचर्स की, वो हम उसके थ्रू एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। And besides it's already taken a lot of time to design and create the course, और उसके जो भी नहीं, कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा। आई एग्री अबाउट योर कंटेंट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अदर फ्रेमवर्क भी है जो डॉटनेट से फेमिलियर हैं। आई थिंक वो ML.NET यूज करके भी वो अपना मॉडल्स लिख सकते हैं। yeah of course, एंड वाइस वर्सा कि विजुअल स्टूडियो के अंदर भी पाइथन की ऑप्शन है कि जो लोग विजुअल स्टूडियो से फेमिलियर हैं वो विजुअल स्टूडियो यूज करते हुए पाइथन का कोड लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। ऑफ कोर्स .NET के अंदर भी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल हैं, और हम विजुअल स्टूडियो के अंदर पाइथन का कोड भी क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इस कोर्स का मकसद ये है कि हम Azure मशीन लर्निंग सर्विस को यूज करते हुए एंड टू एंड मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस डिजाइन कर सकें। तो इस वजह से फोकस हमारा उसी चीज़ के ऊपर रहेगा, और उससे ज़्यादा सपोर्ट जो है ना सारी की सारी वो पाइथन और आर के साथ अवेलेबल है। सर पाइथन के अंदर भी हम पाइथन का कोड यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप उसके अंदर लिख सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स, आई गेस हम लोग डेमो शुरू करें, और क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई वांट के बिफोर लंच आप लोगों को आपके अकाउंट्स वगैरह हैंड ओवर कर दिए जाएं, और ताकि आप बाकी का दिन जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने प्रैक्टिकल्स के ऊपर स्पेंड करके अपनी थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करने के ऊपर फोकस कर सकें। So without further ado, I think I'll need roughly about 5 minutes to get the environment ready. So let's take a short break. Ali, you can stop the recording and share it in the folder, or folder का link share करने का। ठीक है, करता हूँ।
थैंक यू। तो हम दोबारा कब कितना टाइम ले रहे हैं ब्रेक के लिए? जस्ट सर, within 5 minutes